amazing people here on this stage. Thirst Trap ये चल रहा है hashtag आप लोगों के साथ every time we talk about this film. लेकिन उससे पहले, we have to talk about this gentleman here, and he's making faces already, जिनके साथ मिलके ये सपना देखा गया और इसको यहाँ जिया जा रहा है. What do you have to say on that? Abbas Syed, we started a journey about 11 years back, and there was nobody who believed in me. They didn't want to be my manager at that time. तो उस समय मुझे अब्बास सैयद मिल गए. मैं बॉडी बिल्डर और ये ट्रेनर. हम दोनों ने ज़िंदगी शुरू की, and he started managing my work, scripts पढ़ना, लोगों को ना बोलना, लोगों को हाँ बोलना. वहाँ से पहुँचते पहुँचते we came up with an idea. अब्बास सेट किया प्रोडक्शन शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा लोग बोलते हैं कि आपको इस तरह के एक्टर्स के साथ काम करने का मौका नहीं मिलता है, एक्शन डायरेक्टर्स के साथ. You don't get to spend some money, so we should try and be producers. From there the journey started. Now we are producing a second film, so this is Destinies. It's amazing. ये बड़ा खूबसूरत सा बॉन्ड है, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. And of course मैं सबको यहाँ पे we'll get some chairs, but before that, only for your convenience, can we have a quick photo op with the entire team and then इसको आगे बढ़ाते हैं. What is Crakk for you? क्या है क्रैक? मतलब यहाँ सब लोग जानना चाह रहे हैं, व्हाट इज क्रैक फॉर यू? क्या चल क्या रहा है? क्रैक को मैं बहुत पॉजिटिव कॉनोटेशन देता हूँ हमेशा अपनी ज़िंदगी में. कोई मुझे बोलता है ना बंदा पागल है, मुझे पसंद आता है वो आदमी. मेरी माँ क्रैक है, क्योंकि जब मैं सुबह शूटिंग के लिए जाता हूँ 5:30 बजे उठ के, और उस दिन एक्शन की शूट होती है, वो पूजा में बैठ जाती हैं, और जब तक मेरी शूट ख़त्म नहीं होती है वो बैठी रहती हैं. फिर शूट ख़त्म होती है, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, बोलता हूँ कि हो गई उनकी पूजा ख़त्म. वो होता है क्रैकपन. सारे दिन पैशनेटली किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना. मेरे यहाँ पे एक दोस्त भी हैं जो कॉर्पोरेट हाउस में काम करती हैं. ही लीव्स इन द मॉर्निंग अराउंड 9. 3 साल का बच्चा है. रात को वापस आती हैं और उसको प्यार देती हैं. वो भी क्रैक है. सो क्रैक हर आदमी है जो पैशन के साथ कोई चीज़ के पीछे पड़ जाए, और जब उसको मिल जाता तो लोग कहते हैं जीनियस है. Firstly, a very good afternoon to everyone. Thank you for coming. It's a packed house out here. And कैसा लगा आपको हमारा ट्रेलर? So that's really wonderful. It's been incredible journey. ये जब फिल्म आई थी मेरे पास, इसकी मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा. It came to me from a friend of mine, पराग सांघवी. वो शायद ऑडियंस में बैठे हैं कहीं. वो कहीं इधर बैठे हैं ऑडियंस में. ही इज़ वेरी क्लोज टू विद्युत एंड इज़ वेरी क्लोज टू मी. और उन्होंने कहा था कि विद्युत एंड यू हैव टू डू अ फिल्म टुगेदर, और मैं एक फिल्म लेके आ रहा हूँ, ये पिक्चर आपको करनी है. बट अनफॉर्चुनेटली पराग सांघवी का जो स्क्रिप्ट सेंस है इज़ नॉट दैट ग्रेट. और मैंने बोला कि दोस्ती यारी में मैं तो उनके साथ क्रिकेट खेलता था लोखंड वाला में. ओके, बिफोर आई टर्न अ मॉडल ऑल्सो, मैं इसको ना नहीं बोल सकता हूँ इस फिल्म को. तो मैं बोला यार मैं तो फंस गया हूँ अभी ये कौन सी फिल्म आ रही है मेरे पास. And he got me this young man, Aditya Dutt, home, and he said, "Sun le," and I was like, "Suna de." Aditya was not ready. I actually thought we were just going there to say hi, hello, and we'll do a narration after like 1-2 days. That's all. Right. When he narrated to me the subject, and he told me how Vidyut and him had kind of planned it, every action scene, every detailing, I was just blown away. I was surprised. Or I've been in the industry now for more than 2 decades. To get a surprise and to find something so refreshing was really fantastic. So thank you Parag for making this introduction and making me think, and thank you Vidyut and Aditya and Abbas for having me on this film, because it really made me push myself to an extreme level. And Crakk, if you ask me what it is for me, is cracking all my bones while making this movie. Say who? First of all, everyone, hello, hi, and thank you for coming. मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? Good, क्या बात है? Love you too. अभी 2 मिनट पहले तो एमी बोल रहा था, अब नोरा को देख के नोरा बोलने लगा. हाँ. Okay. हाँ? क्या बोला? अच्छा, okay. हाँ, to answer your question. So, it's actually a very funny story. है ना, sir?
I was the last one to come on this film. Like ekdam last minute mein. And I was on my way to OT. And you know, when you go to OT, you're driving up those hills, right? Or bilkul network nahi hai. So sir had just called me to narrate the film. We did a Zoom narration. We did a Zoom narration, WhatsApp. And the network just switched off in the middle of the narration. And I'm like, hello, freaking out. calling, switching off. I said, yaar, kya luck hai? I'm getting a lead role and a narration's happening and I don't have network. So I was panicking, freaking out. Eventually, when I reached my destination, called him, gave me the full narration. I said, sir, of course I want to be on board. I think not only is the cast superb, but the level of what they were trying to attempt and their vision was so grand. I was like, boss, mujhe karna hai padega yaar. Fuck, you know, like if I don't do this, I'll be an idiot. And I knew ki agar main hoon na is project mein, I will definitely push myself as an artist. And that's exactly what happened. You know, and you said like as a leading lady, of course, it's a bit scary, you know. Of course it's scary. You don't know कि response कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे. तो वो भी है कि typecast होता है ना sometimes. So people get comfortable seeing you doing some certain things, and then अगर आप कुछ अलग करते हो तो कभी-कभी response अच्छा होता है, कभी-कभी अच्छा नहीं होता है because people they don't want to give you that chance. But मैं खुश हूँ क्योंकि सर ने मुझे chance दिया है, and of course अब्बास सर ने भी. I'm really really happy and मैंने बहुत मेहनत किया इस movie में, and I just hope people appreciate it. पहली बात तो ये, you gotta bet on yourself because you should be the first one to bet on yourself. और इसी पागलपन वाली सोच वाले लोग आसपास रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी आप पे bet करेंगे. I've always been told by my fans, Jammwalians, they're like a family, and I listen to a lot of things. They tell me this is how you promote and all that. मुझे अक्सर बोला जाता था कि आपको बड़े बजट की फिल्म करने की ज़रूरत है, आपको बड़े बजट की फिल्म करने की ज़रूरत है. I thought it's right, and I needed to work with a leading lady who is really the star. You need to get a cast opposite me. ये सब की ज़रूरत थी उनके मुताबिक और लोगों के मुताबिक. तो मैंने ऊपर वाले को कहीं मन में बोल दिया होगा कि आई थिंक दिस शुड ऑल कम टुगेदर एंड दिस इज एज सिंपल एज इट जस्ट फेल इन इट्स प्लेस. जैसे नोरा बोल रही थी, शी वाज लाइक द लास्ट मिनट एंट्री. बहुत मुश्किल होता है किसी को ढूंढो आप जिसको फिल्म में रोलर ब्लेडिंग करवानी हो. हमारी एक्ट्रेसेस फिट तो बहुत हैं मगर उनको आना चाहिए. उसके बाद उनको समय देना पड़ेगा कि ट्रेनिंग भी करें. She did it. Thank you. You gave it your all. That was amazing. Thank you. So ऐसे करते हैं ना सब कुछ सही हो गया. And that's what you see now. It feels nice. Thank you. It is an era of influencers now. I think, you know, a lot of them have become stars in their own right. The kind of numbers they garner, the reach that they have. And it's quite exciting because I feel like the Gen Zs now have a different way of looking at careers, per se. A lot of them we used to grow up and say, oh, we want to be like a lawyer, engineer. Now it's like, you know, 12-year-old girl or a boy will be like, I want to be an influencer. And it's actually a real job and people make a lot of money out of it. But it's not an easy job. You have to have a personality. So not just anyone can be an influencer. So with this role, I understood that Alia, because my character's name is Alia, she had to have a bubbly personality. It had to stand out and it had to grab people's attention, the audience's attention, and that's what influencers do essentially. I've tried to do mostly all my stunts in the film. It's been, I think, one of the most physically challenging films. पहले बात तो बोल दिया था कि ठीक है ये सब एक्शन होगा, it'll be so amazing, we'll do this, do that, and you feel okay, I'll be able to do all of that, you know. But when you hug a Vidyut and you feel these muscles which you didn't even know existed in certain bodies, and I am quite a fit guy, but I was like, अरे ये कौन सा जानवर है? You know, I had to really up my game on that department. It's not only that, it was not only just Vidyut. I think Vidyut
and Aditya together had also selected this fantastic group of athletes from all over the world. Okay, who come and are actually part of my this Maidan, the place where this whole contest is going to take place. But those guys, my God, they were fantastic. I was so inspired and in such awe in this movie, watching all these people do their things. So I had to constantly push myself. I had to constantly say, "Nahi, mujhe wapas karna hai. I have to do it. I have to do it." And in that process, I did slip a disc or two. And I was laid up in bed, and they were very kind to cancel shoot for a good 2-3 weeks till I could recover and come back and finish the sequence. But yeah, we had to do it. And on the last day, Vidyut didn't leave me there also, because the disc that had got repaired, he displaced it again. So I had to go back into the hospital. So that's how we are, and that's how Crakk was. And I don't think I would change it for anything, but I don't know if people really get opportunities. आप पूछ रहे थे कि हॉलीवुड में लोग अपने अपने स्टंट्स करते हैं, या क्या कभी कभी मौका ही नहीं मिलता. जैसे कि आप कह रहे हैं कि वहाँ के सारे एक्शन डायरेक्टर्स आए थे, एंड दे वर ऑल फैंटास्टिक, इसलिए आए थे. मगर मज़ा तो तब आया जब हमारे इंडियन एक्शन डायरेक्टर आए थे हमारे सेट पे, और जब हमने तब एक्शन की, जब रवि वर्मा आए थे. आई थिंक दैट वाज द रियली फन पार्ट ऑफ इट. अब चलो यार, अब घुसे मारो. कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है. तो इंडिया इज अप देयर एंड वी आर डूइंग वेरी वेरी वेल. एंड ट्रस्ट मी, जितना हमको मिलता है उसके अंदर जो इन्होंने किया है इस फिल्म में, वाकई कमाल का. नोरा, आप Fire Brigade, wow. The set was on fire. I'm not gonna lie, of course. दोनों उस बहुत. टाइम में मुंबई में हीट वेव चल रहा था. नहीं, वाकई में it was 45 degrees जब हम शूट कर रहे थे नोरा के साथ. फिर नोरा भी आ गई तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया. Oh God. सच बताऊं, मैं ये सब के बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि जो भी स्टंट मुझे करना चाहिए था रोलर ब्लेड्स के साथ, अरे I was going crazy. I was like, ये क्या है? Immediately. ये कई बार गिरी भी थी. Oh my God, जब oh my God. It's not easy. She fell. It was terrible. So एक situation है जब मैं विद्युत के पीछे हूँ और हम जा रही हैं रोलर ब्लेड्स के साथ and speed के साथ, like very fast. And हम एक construction site में थे ना, बस you can imagine concrete कैसा है, इतने सारे potholes है. And जब मैं कनाडा में थी बचपन में, मैं हमेशा रोलर ब्लेड्स कर रही थी, बट इट वाज लाइक नाइस स्ट्रीट्स, नो पॉट होल्स, नथिंग. तो यहाँ पे इतने सारे क्रैक्स है, इतने सारे पॉट होल्स है, एंड सर बोल रहा है कि प्लीज़ तेज से जाना है रोलर ब्लेड्स के साथ. I'm like, तेज से? इतने सारे पॉट होल्स, हाउ? It's not possible. So I said, chalo, let's just do it, because Arjun sir is doing his stunts, Vidyut sir is doing his stunts. So मुझे भी करना चाहिए. Vidyut is also, वो भी कर रहा है अपना stunts. So I'm like, मुझे भी करना है. I didn't want to look like, नहीं, मुझे stunt double चाहिए. So I was like, चलो, करते हैं. So we're going with speed, ta 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 ta. And then suddenly, I just fall. Oh, उसके ऊपर क्या है? हमारे बीच में एक rope है. Okay, so he's got a rope on his waist. मेरे वेस्ट पे रोप है, एंड ही इज गोइंग एंड आई एम गोइंग फुल स्पीड में जा रहा हूँ, फुल स्पीड में जा रहा हूँ. Boom, 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 boom. Then I fall. So when I fall, he doesn't know that I have fallen. So he's going. So he's dragging me with speed. So I have been dragged across this whole concrete area, and I'm like, No, one thing, no, a martial arts guy knows everything. उसको सब पता है कौन गिर गया है, कौन किधर है, क्या हो रहा है. You think? उसके आँखों के पीछे भी आँखें होती हैं. It was so, oh my God. तो मैं चिल्ला रही थी, फिर उसने रुका, and he's like, oh my God. पूरा पीछे ना glass. And we all were very concerned yeah. if we got the shot or not. Yeah, I know that, because you're like, it's okay, shot मिला है, it's fine Nora, thank you. And I'm like, call a doctor. मैं पीछे था स्टेज के, और मुझे आदित्य दत्त ने एज अ डायरेक्टर पूछ ही लिया. वो अर्जुन भगाता हुआ गया था गाड़ी को, तुम क्यों नहीं गए? ये पीछे बैठी थी, गिर सकती थी. बट इनको चाहिए कि वेंट्री जब आप लोगों के सामने आया तो फुल स्पीड में आओ, इसीलिए धीरे गया था. And also to add, when I got hurt, I wanted to act कि no, मैं भी विद्युत की तरह हूँ, it's fine, I do my own stunts. So I got up, I'm like, I'm fine.
I'm fine. Everyone's running. Ma'am, I'm like, I'm fine. But I was not fine. I cried in my vanity like a baby.